Hello, dear students. Today we will discuss worksheet number 40A, life process respiration. The human respiratory system can be broadly divided into two parts based on function. System of interconnecting cavities and tubes that conduct air into lungs. Nose, warm filter air as it is inhaled. Pharynx, passage for air leads to trachea. Larynx, voice box, trachea. Connect pharynx to bronchi. The rings of cartilage provide structure and keep the windpipe open. Trachea is lined with fine hair called cilia, which filter air before it reaches lungs. यानी lungs तक पहुंचने से पहले nose, pharynx, larynx, trachea से air जाती है. ये सब air को warm करते हैं और filter भी कर लेते हैं. Bronchi. These are two branches at the end of trachea which lead to a lung. यानी फिर bronchi होते हुए lungs तक पहुंचती है. System where exchange of respiratory gases occur. Respiratory bronchioles, narrowest airways of lungs, deliver air to exchange surface of lungs. Alveolar ducts, a network of similar branches leading from the bronchi into lungs tissue and ultimately to air sacs. Alveoli, the functional respiratory units in the lungs where gases ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज एंटर एंड एग्जिट द ब्लड स्ट्रीम. यानी एल्वेली में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इनहेलेशन, it is taking in air rich in oxygen. It occurs due to contraction of muscles attached to ribs. This lifts ribs and flattens diaphragm, which increases the volume of thoracic cavity. Hence, the pressure inside the thoracic cavity decreases and air rushes inside ऑफ द लंग्स. यानी डायफ्राम जब फ्लैटन होता है तो अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और एयर अंदर पहुंच जाती है. एक्सलेशन is expelling of air rich in carbon dioxide. It occurs due to relaxation of muscles attached to ribs and diaphragm become dome shaped. This decreases the volume of thoracic cavity and decreases air pressure and expels air out of the lungs. यानी इसमें क्या होता है, डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, तो ये अंदर का प्रेशर को दिस डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी को के वॉल्यूम को ये कम कर देती है. ठीक है. और ये लिखा एंड डिक्रीज एयर प्रेशर. डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करेगा एयर प्रेशर, तब एक्सपेल जो एयर जो है वो बाहर चली जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं, विद इन द लंग्स एल्विली singular alveolus provides a surface where the exchange of gases can take place. The walls of alveoli contains an extensive network of blood vessels. The capillaries bring carbon dioxide rich blood from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. When the body size of the animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivered to all parts of the body. यानी एल्वेली के अंदर बहुत सारी जो कैपिलरीज होती हैं जो कि यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. जो बॉडी के अंदर से ब्लड आता है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाता है. Instead, respiratory pigments take up the oxygen from the air in the large lungs and carries it to the tissue which are deficient in oxygen. Before releasing it, in human being, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. This is present in the red blood cells, रेड ब्लड कार्पसल्स या सेल्स. यानी कि बड़े जो एनिमल होते हैं उसमें खाली डिफ्यूजन से काम नहीं चलता. एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लंग्स से ले जाके शरीर के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है with the help of blood. Now let us discuss some question of what is the function of ring of cartilage. ठीक है, तो हम रिंग ऑफ कार्ड द रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कीप द विंड पाइप ओपन. बस यहाँ तक कर लें, वरना कोलैप्स हो जाएंगे अगर रिंग ऑफ कार्टिलेज ना हो. How is the oxygen transported in large multicellular organism like human? ऐसे कर लीजिए. When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen.
delivered to all part of the body. Instead, respiratory pigment take up the oxygen from the air in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it. In human being, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. This is present in red blood corpuscles. यहाँ तक कर लीजिए. Explain the movement of diaphragm during inhalation and exhalation. तो इन इनहेलेशन इट इज टेकिंग इन रिच, यहाँ से करें आप, it is taking in air rich in oxygen. It occurs due to contraction of muscles attached to ribs. This lifts ribs and flattens diaphragm, which increases the volume of thoracic cavity. As the pressure inside the thoracic cavity decreases and air rushes inside the lungs. ठीक है. Exhalation में होगा it is expelling of air rich in CO2. It occurs due to relaxation of muscles attached to the ribs and diaphragm, become dome shaped. This decreases the volume of, increases आएगा ये, this increases the volume of thoracic cavity and this decreases the volume of thoracic cavity and increases air pressure and expels air out of the lung. यहाँ तक कर लीजिए. ये डिक्रीज एयर प्रेशर की जगह इंक्रीज एयर प्रेशर कर लीजिएगा. इस तरह से आपने वर्कशीट की. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन.